बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पाकिस्तान का हम 5वां मॉड्यूल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हैंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हैंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में काम कर रही है। और क्या काम कर रही है, आइए देखते हैं। हैंड्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विच इज़ वर्किंग टुवर्ड improving health, promoting education, poverty alleviation, building infrastructure, and developing social institution for community empowerment. अगेन एक नया प्रिंसिपल, एक नई स्ट्रेटजी जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो एम्पावरमेंट की स्ट्रेटजी है। और हम अपने कोर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एज अ कम्युनिटी वर्कर, एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर एंड एज अ सोशल वर्कर, आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं आपने उस कम्युनिटी को एम्पावर करना है। तो हैंड्स जो है एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने की कोशिश कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, पावर्टी एलिविएशन और बहुत सी चीज़ों के अंदर। Their aim is to empower poor. Hand strength is 14 volunteer board members, 10,000 workforce, and 1,000 of community-based volunteer of more than 6,300 partner organizations. विजन क्या है इसका? क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल इन एन इक्विटेबल ह्यूमन पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ। गोल 2030 क्या है इनका? 25,000 मॉडल कम्युनिटीज। स्ट्रैटेजी 2030 इनकी क्या है? कनेक्टेड कम्युनिटीज टू 2030। थीम्स जिसके अंदर हैंड्स जो है वो काम कर रही है, इट्स हेल्थ केयर। अगेन इट्स अ कम्युनिटी प्रॉब्लम जिसके लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं। शेल्टर, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आराम और सुकून से रह सकें। वॉश वॉश को हम वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के नाम से जानते हैं, ताकि ये लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं अबाउट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। एजुकेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ केयर healthcare is the honor to introduce a cadre of community-based outreach health worker in the area where there is no lady health worker by a pilot project held in remote district of Sindh during 1999 to 2003। ऐसी जगहों पर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जहां पर कोई लेडी हेल्थ वर्कर नहीं जाती थी या वहां पर कोई लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद नहीं थी। These community-based health workers are local, literate, low literate, illiterate females selected as per defined selection criteria to provide basic health services in their defined targeted areas. अच्छा, एक और चीज़ आपको याद है, हमने अपने पूरे कोर्स में डिस्कस की है कि आपने वहाँ जो काम करना है वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए काम करना है। तो हैंड जो है उस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है, यानी वहाँ पर जो पहले से मौजूद लोग थे उनमें से उनको इस्तेमाल किया है उन्होंने, उन ख़वातीन को। उनमें वो पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं, इलिटरेट ख़वातीन भी है, लो लिटरेट ख़वातीन भी है। तो वहाँ के लोकल टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि दाई हो गई, दाइयों को इस्तेमाल करते हुए उनको और थोड़ी ट्रेनिंग देते हुए वो वहाँ के लोगों की हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बेहतर कर रहे हैं। द सिलेक्टेड फीमेल इज ट्रेन्ड टू सर्व हर कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी बेस्ड मारवी एंड मिसाली वर्कर टू प्रोवाइड सर्विसेज अंडर सर्विस नॉन LHV एरिया, LHV और LHW एरियाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स। वॉश जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन डिपार्टमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड सेफ वाटर, जिसको हम क्लीन वाटर भी कहते हैं, जो पीने के काबिल हो और ऐसा कोई जो या जिससे इंसान को कोई हार्म ना हो। Safe water and sanitation service to its target population. WASH department consists of series of projects based on the foundation of field tested best practices and proven capabilities. The innovative model by hand WASH department are low cost, durable, socially acceptable and environmental friendly. एक जो मेन इसके अंदर कंपोनेंट है, जो एक मेन लाइन डिस्कस करने वाली है, वो सोशली एक्सेप्टेबिलिटी की बात है
यानी वहाँ जो जिन जिन इलाकों में काम कर रही है और जो जो काम ये वो वहाँ पे कर रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल हैं। अगर हम अपने कोर्स की बात करते हैं तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था अपने कोर्स के अंदर कि आपने जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू करना है अपने टारगेटेड एरिया के अंदर, उसको लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए, वो सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो हैंड्स जहाँ पर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी में कामयाब हुआ है। शेल्टर यानी लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना, आइडियाज के नाम से ये काम करते हैं। आइडियाज सर्विसेज आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग लो इनकम housing, projects with good quality infrastructure and alternate energy solution to the target population. Education again is the major theme of hands. The ultimate goal of education and literacy department is to promote education for human and institutional development. The activities of education and literacy department begin with the respective community and school assessment, which give complete information in terms of social values, norms, literacy level, educational facilities, enrollment of student, teacher capacity of teaching, learning environment, learning facility, and etc. etc. To ensure community participation in program activities, local community based organizations जिनको हम CBOs भी कहते हैं, school management communities, SMCs are formed, strengthened to meet HAND's ultimate goal of community development through quality education. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, एक बहुत बड़ा थीम है किसी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी इलाके में काम करने के लिए। मैं हमेशा से बात करती हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है अगर किसी माशरे से आपको गुर्बत को ख़त्म करना है तो वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा करना पड़ेगा। Livelihood Enhancement Department was initiated in 1988, focusing on the development projects of communities through income generation opportunities, skill enhancement, and overall improvement in livelihood of underprivileged. This department has quite extensive activity divided in two components. One is on-farm and other is off-farm trainings. So, self employment, अगर आप किसी माशरे से कोई मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। तो आज हमने हैंड्स के बारे में डिस्कस किया जो अपने डिफरेंट थीम्स को लेकर कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान में काम कर रही है।